dear tiny tots. Welcome to all of you in today's maths class. My dear tiny tots, in today's maths class, we are going to start on a new topic, that is time. In your math magic book on page number 129. Time. The topic name is time. Time हम किस में देखते हैं? बताइए, किस में आता है टाइम? क्लॉक। यस, क्लॉक। टाइम हम किस में देखते हैं? क्लॉक में। देखिए मैम ने बोर्ड पे क्लॉक बनाई भी है, तो आप सबने देखी होगी क्लॉक घर में। बट इसमें टाइम कैसे देखते हैं आज मैम आपको ये बताएंगे। बहुत सिंपल है। जो क्लॉक है उसमें क्या है, 2 हैंड्स होते हैं। आप देख रहे हैं ना, एक हैंड क्या है, लॉन्ग है, और एक हैंड क्या है, शॉर्ट है। वन हैंड इज लॉन्ग एंड अदर हैंड इज शॉर्ट। जैसे कि आपको दिख रहे हैं, देखिए एक थोड़ा लंबा है ना और एक शॉर्ट है उससे। जो लंबा हैंड है, जो लॉन्ग हैंड है, वो कौन सा हैंड है? मिनट हैंड। जो लॉन्ग हैंड है दैट इज मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज आवर हैंड। आवर हैंड। यस, लॉन्ग हैंड इज मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज आवर हैंड। आप इस टॉपिक को बस जितना आपका थोड़ा सा आप समझेंगे, बाकी डिटेल में आप इसे आगे समझेंगे अब आगे की क्लासेस में। बट अभी आपको बस पता होना चाहिए कि क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड। और जो लॉन्ग हैंड है वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? टेल मी फास्ट। मिनट हैंड। और जो शॉर्ट हैंड है उसे हम क्या कहते हैं? आवर हैंड। आवर हैंड। और इसमें टाइम कैसे देखते हैं, देखिए अभी मैम आपको बता रहे हैं। When the minute hand is at 12, देखिए जो मिनट हैंड है वो 12 पे है ना, और शॉर्ट हैंड इज पॉइंटिंग टू अ नंबर 2। शॉर्ट हैंड देखिए किसको पॉइंट करे? नंबर 2 को। देन टाइम इज, क्या टाइम हो जाएगा? 2 o'clock। क्या टाइम हो जाएगा? 2 o'clock। 2 o'clock। टाइम क्या हो जाएगा एग्जैक्ट? 2 o'clock। ठीक है। और अगर यही हम when the minute hand is at 12 and our hand is pointing 4, then time is, tell me fast, time is 4 o'clock। क्या टाइम हो जाएगा? अगर शॉर्ट हैंड 4 पे है और मिनट हैंड 12 पे है, देन टाइम इज, व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम बच्चा? टेल मी। 4 o'clock। क्या टाइम हो जाएगा? 4 o'clock। वेरी गुड। इस तरह से आपने बताना है मैम को, फास्ट फास्ट। अभी देखिए मिनट हैंड इज ऑन 12 and the hour hand is pointing a number that is 7. Then what will be the time? What is the time? क्या टाइम होगा बताइए? 7 पे आवर हैंड है, शॉर्ट हैंड है, और लॉन्ग हैंड जो है वो 12 पे है। देन व्हाट विल बी द टाइम? क्या टाइम होगा? क्या टाइम है बताइए जल्दी। 7 o'clock। यस, एब्सोल्युटली राइट। 7 o'clock। 7 o'clock। चलिए और रोटेट करें इसे। ओके, नाउ टेल मी, when the minute hand is on 12 and the hour hand is on 10, then what is the time? बताइए। 10 o'clock। Yes, time is 10 o'clock. Absolutely right. Very nice. 10 o'clock. फिर चेंज करें, फिर रोटेट करें। अभी देखिए हमने किया इसे, मिनट हैंड इज ऑन 12। मिनट हैंड को देखिए मैम ने फिक्स किया हुआ है, हम किसको मूव कर रहे हैं? आवर हैंड को। नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइम? Minute hand is on 12
and our hand is at 5. Tell me fast, what is the time? 5 o'clock. 5 o'clock. Correct. 5 o'clock. जल्दी से बताइए एक बार और. If the minute hand is on 12 and the hour hand is on 9, like this, at 9, then what is the time? 9 o'clock. 9 o'clock. Very good. 9 o'clock. Now our hand is on 11. Then what is the time? 11 o'clock. Yes, 11 o'clock. Now time is 11 o'clock. Time is 11 o'clock. 11 o'clock. चलिए अभी और बताते हैं. Okay, now tell me if the our hand is on 1 and minute hand is on 12. Now tell me the time. 1 o'clock. 1 o'clock. Exactly. Very nice. 1 o'clock. Okay. So my dear champs, I hope you will understand it now. Now we'll do the activity related to this topic on page number 130. Now open page number 130. Take out your books. Let's start. How we will do this activity? My dear students, now we will do the same topic in your Math Magic book on page number 130. Now let's see what we will do on this page. Match the clock to the correct time. देखिए इस पेज में कुछ क्लॉक्स की पिक्चर है. हमें उन क्लॉक्स को उनके करेक्ट टाइम के साथ मैच करना है. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्लॉक. व्हाट इज द टाइम? देखिए द बोथ हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज ऑन 12. देखिए दोनों हैंड किस पर है? 12 पर है. देन व्हाट इज द टाइम? 12 o'clock. Very good. Now check out where is written 12 o'clock. देखिए 12 लिखा हुआ है o'clock. Now match the clock with the correct time. Move on next. When the minute hand is at 12 and the hour hand is pointing to a number 5, then what the time is? Tell me fast. Time is when the minute hand is on 12 and the hour hand is pointing at number 5, what is the time? 5 o'clock. Yes. Now let's check where is written 5. Here it is. Now match it. Move on next. When the minute hand is at 12 and the hour hand is pointing to a number 11, then the time is? 11 o'clock. Yes, 11 o'clock. And here is written 11. 11 o'clock. Move on next watch. Next clock. When the minute hand is at 12 and the hour hand is pointing to a number 6. देखिए hour hand किसको point कर रहा है? Number 6 को. Then what the time is? Tell me fast. क्या time होगा? When the hour hand is at 6. Time is? 6 o'clock. Yes, and where is written 6? Here it is. Now match the clock to its right time. Move on next watch. Next clock. When the minute hand is at 12 and the hour hand is pointing to a number 10, then what the time is? Our hand is at 10. 10 o'clock. 10 o'clock. And where is written 10? Here it is. 10 o'clock. Now match it. 10 o'clock. Move on next clock.
when the hour hand is at 12 and when the minute hand is at 12 and the hour hand is pointing to a number 9, then the time is 9 o'clock. Yes, and where is written 9? Here it is. 9 o'clock. Move on next. When the minute hand is at 12 and the hour hand is pointing to a number 7, then what the time is? 7 o'clock. 7 o'clock. Now let's check. Where is written 7? Here it is. Now move on next clock, last. The minute hand is at 12 and the hour hand is pointing to a number 2. Then what the time is? 2 o'clock. 2 o'clock. And on the top here is 2 o'clock. So my dear champs, आपने भी इस पेज को इसी तरह से कंप्लीट करना है और इसकी पिक्चर्स ज़रूर सेंड करनी है. ओके, यही आज का आपका होमवर्क है. Till then, bye bye, take care, happy learning.